Hello everyone, another Saturday and another new guest. Hi, welcome back to Voices of Meerut. And today we are going to give you a very important talk on nutrition. Yes, so we have a special guest here with us, Dr. Bhavna Gandhi. Hello, welcome. I can keep on listing her credentials and we will finish the podcast in that only. But let me start by introducing her very briefly. She is a PhD certified dietitian educator. She has so many accolades in her name. She has been in Keto-Dietitian, a Bariatric Dietitian, a Naturopath, yoga master, n number of publications to her name. एंड प्लीज आप अपने आप बताओ क्योंकि इतनी सारी चीजें इसमें से तो मुझे लगता है आदि मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है. थैंक यू वेरी मच राशि फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत सारी है, जरूरत नहीं. जितनी इंट्रोडक्शन दे दी उतनी काफी है. थैंक यू नाम ही काफी है मेरठ में तो. हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय योर बेस्ट विशेस. यस, इट इज. So let's just start by very beginning. It is a little bit, I would say, upcoming field nowadays. But probably when you started, what was the motivation and what brought you into such a thing which is very required, but I think people don't realize it. तो शुरुआत कहाँ से हुई? आप मुझे वहां से बताओ. Thank you, Rashi. This is a very good question, actually, because if you ask me, I entered this field accidentally. Nobody could believe it, but now this is my passion. So when I entered and when I saw the impact of the food on the body, means food is very important, and in our Indian scenario, food, अतिथि देवो भव, हम खाना भी जो खिलाते हैं वो अपने मेहमान को खिला खिला के मारते हैं. आई यूज दिस लैंग्वेज बिकॉज दैट इज food is your emotion. This is the respect what you are showing. So when I entered this field accidentally, then I saw the impact of the food, and then it started in my brain. See, because I always wanted to be in hospital, and then I thought, why to go through medico, why not through this? So that's the reason I became clinical dietitian. When I came to Meerut, I was the very first dietitian of Meerut. There was no concept of dietitian. Who is dietitian? What do they do? By God's grace and because of my godfathers and mentors, they really made that position. Earlier, it was like during that time in Delhi also, okay, dietitian means hospital food providing the diet. That's all. When I started with the clinic, it was like even the doctors were skeptical. Dietitian kya karegi? But when I saw the journey and when they saw the difference with my prescriptions and the sugar levels, then in the hospitals, patient coming out of septicemia, ventilator patient is getting out of ICU, reducing the ICU stay within 4-5 days. So even now the people are becoming aware. And if we talk about during the COVID, the pandemic have made everyone realize the importance of diet now. बिल्कुल. I remember when I used to tell a diabetic patient, चीनी नहीं खानी. क्यों नहीं खानी? चीनी तो खानी है. And now if you ask the young generation, they are not having sugar. You don't have to compel them. Rather, many times it happens, you are going in hypo, please have something. So the scenario has changed that. सही बात है. The diet have really become important. It is a cornerstone for the treatment as well as for the prevention of the diseases also. बिल्कुल. ये तो सबको अगेन सोशल मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, आई थिंक आज तो बहुत लोगों को पता है डाइट का इतना रोल है. बट आई एम श्योर व्हेन यू स्टार्टेड एंड इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी टू कन्विंस पीपल कि नहीं, डाइट इतना बड़ा रोल आपकी हेल्थ में प्ले करती है. तो मुझे वहां से बताइए कि क्या जर्नी रही और यहाँ तक पहुंचने का सफर. You are a very acclaimed person, I know that, and I have been having a difficult time to get hold of you. Thank you very much. As I said, initially I really had to work hard to create my position, but again, your work speaks. If you are having a passion towards your field, see, the very first thing I always say, it's the empathy. It's your passion, it's your empathy. Science gives you, nutrition is a science. You'll get the evidence-based data, everything, the guidelines are there for you to follow. But how to tailor cut it made, you really need to have the empathy also to listen to the patient. See, food is cultural, it's social, and it's emotional also. बिल्कुल. Like, I always say a diet has to be practically feasible enough diet. You cannot expect from a peripheral patient, eat quinoa. No, a person cannot eat quinoa. I'll ask you what it is.
I remember I learned so many words, Bhedadi and all that. I was not aware. Right. So you need to get to the culinary habits of the patient. You need to have empathy and passion. Means you really need to get down to their level. You need to tell them the choices which are indigenous, freely available of their taste. Right. So initially, as I said, even I had some knows from the doctors also, but obviously they are aware, they are educated, and people are educated. And as I said, result says. बिल्कुल. When you see that twinkle and a tear of joy in the eyes of a mother of a 16-year-old type 1 diabetic child, so that really gives you immense pleasure and satisfaction. This, yes, you have done the work. When you see a ICU patient coming out of ICU who was on ventilator, showing drastic improvement, and then the family saying thanks to you. It's not thanks, it is my job, what I'm doing. But that satisfaction really makes you work hard. Knowing the guidance, tailor cutting it, individualization, then pen it down on the prescription for the patient. नहीं सही बात, ये आपने ना बहुत अच्छा एक वर्ड बोला, यहीं से उठाते हैं, टेलर मेड. तो व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज दैट एक तो ट्रेंड्स जब हम बात करते हैं या फिर स्पेशली विद सोशल मीडिया, आई कीप ऑन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, जो भी चीज चल जाती है या जो बहुत वाइडली प्रेवलेंट हो जाती है सब उसे करने लगते हैं. क्रैश डाइटिंग है ये कर लो, इंटरमिटेंट है ये कर लो, बट people don't realize that सब चीज के लिए नहीं बना. And obviously there comes role of a specialist like you who says कि ये करना है ये नहीं करना. इस बारे में आपका क्या कहना है? Thank you. See, social media is a double-edged sword, right? If we talk about pandemic, we have used social media for vaccination, and it really showed a positive results, right? But the other side is this: social media is algorithm-driven content delivery system is there. Whatever you see, it's an echo chamber basically. You go for one kind of a product, that may be beauty product, then immediately the very next second you'll start seeing all those ads. It shows you what you want to see. Exactly. It shows you what is there. It shows you what do you want, whether it's applicable or not, evidence based or not, and viral. The things become viral. जो दिखता है वो बिकता है. ये ना वायरल वाली प्रॉब्लम है. वायरल तो गलत चीज या फिर जो हम बोलते हैं ना क्रिंजी, गलत या अजीब, उसका वायरल होने का चांस ज्यादा है. क्रिंजी, गलत और अजीब भी नहीं है, बिकॉज हमारे पास एवरीथिंग इज ओवर एग्जैजुरेटेड, ओवर सिंप्लीफाइड. इफ यू सी वेट लॉस, क्विक वेट लॉस, इट्स नॉट पॉसिबल. सबको ऐसा शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में, which is not possible. There is no shortcut for anything in your life, right? Then we don't have a gatekeepers. Although WHO itself have given the 2020 guidelines that you cannot disclaim anything. And if you are saying, if you are not having proper credentials, then you are supposed to give the disclaimers. Not being followed. कोई नहीं करता. हमारे इवन in our field, क्या I am saying, अगर dermatologist है, there are so many beauty influencers who के ये product ले लो वो ले लो, and then unfortunately a lot of people get side effects from them. तो भाई यही बात है ना, आप पहले बात में ही आप ऐसे अनक्वालिफाइड पर्सन की बात मान ही क्यों रहे हो? Exactly. अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए हैं, like a person like you and me, if you are giving any reel on that, then we are supposed to put our credentials. So this is a request to all of you, whoever is listening. So please check the credentials. Credentials of a person who's speaking. Influencer है. See, if you see during the COVID, everybody became the influencer, right? Going to a gym for 6 months, or if they have followed any detox diet. And if you see, we are seeing patients, detox वाले, electrolyte imbalance हो रहा है, hypo में जा रहे हैं, they are getting admitted. ये detox का तो ना concept, even people come and say detox करा है, किस चीज से? I said your body is inbuilt for detox, right? Your liver and kidney is doing that job. ये आप किस चीज से और detox कर रहे हो? तो उनको बड़ा अजीब concept लगता है कि नेट पे तो अरे भगवान जी ने फिट करके भेजा है यार, अंदर अपने आप डिटॉक्स हो जाएगा, आपको नहीं करना उसके ऊपर. आपको नहीं करना. आई ऑलवेज से डिटॉक्स करना है तो अपनी थॉट्स का कर लो जरा.
ये हम तो यही बोल रहे हैं. आपके प्रोफेशन में तो yes you can say that. बिल्कुल बिल्कुल. But very good points. I completely agree with that. And for this we say the right treatment at the right time, but also from the right person. Actually, you should always check the credentials also, check the experience also. It is not so that anyone, see, if I see my interns and students, they are coming up with the reels. You don't have the knowledge actually. Even if you are, even if you and me are giving any content on the reel, then make it sure that it do have evidence also. We have gone through the research also. So whatever you need to have a vigilant eye before you follow anyone. This is, I think, a little different when we see international creators do any kind of work. आप generally देखोगे उसके नीचे ना they have the study listed या they have the credential listed कि ये यहाँ से लिया है मैंने या ये पेपर है आप इसे पढ़ सकते हो. So I think that can be obviously a beginning of starting something which is more verified. कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ जो हवा में बोल रही हूँ उसका कुछ बैकअप है. You are right. अब जैसे हम अपनी पीपीटी में भी तो देते हैं रेफरेंसेस. बिल्कुल. I always try कि हम रेफरेंसेस दें और कुछ नहीं आप नीचे से एस्टेरिक मार्क करके डाल. सब करते हैं और करना चाहिए. में भी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यही कहती है बट कितने करते हैं. वो तो फिर देखिए ये तो कॉन्शियस या माइंडफुल कंज्यूमरेशन ऑफ कंटेंट है कि आप क्या करना चाहते हो कब करना चाहते हो. ये तो एंडलेस डिस्कशन है. आई थिंक so many people are fed up of this, but I don't see a very easy way out कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है. Coming back to these viral diets, लॉट ऑफ पीपल या पेशेंट जब आते हैं ना कहते हैं हमारे टाइम पे ये नहीं होता था. एक तो डाइट में ये लाइन कॉमन है. लेट्स टॉक अबाउट द ग्लूटेन सेंसिटिविटी. वो स्पेशली घर के एल्डर्स आके कहते हैं हमारे टाइम में नहीं होती थी अब इस बच्चे को आप क्यों कह रहे हो या इसके लिए क्या करा जाए. उस बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए कि ग्लूटेन क्या है और इसकी सेंसिटिविटी से क्या दिक्कत होती है. See, actually ग्लूटेन पहले भी था. ग्लूटेन इस वीट के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन जिसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं. अगर इंटेस्टाइन में वो एंजाइम नहीं है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा. राइट. सो ग्लूटेन डिजीजेस शायद पहले भी थी पर पहले इतने अवेयरनेस नहीं थे, टेस्ट नहीं थे. अब क्या है कि ग्लूटेन नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो दैट्स अ सेलिएक डिजीज पेशेंट. राइट. अब इसमें भी दो है, कई सेलिएक डिजीज पेशेंट है, कई ग्लूटेन सेंसिटिव पेशेंट है. दे आर नॉट एक्चुअल सेलिएक बट वही थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया एवरीवन इज बिकमिंग सेलिएक. हमने ग्लूटेन छोड़ दिया. वी आर हैविंग ग्लूटेन फ्री डाइट. व्हाई यू आर हैविंग ग्लूटेन फ्री डाइट? हैव यू गॉट योर टेस्ट एंड नो? सी, अब क्या है, पहले जब गेहूं आता था रखा जाता था उसकी गर्मी निकाली जाती थी पिसता था तो दैट वाज समथिंग ऑथेंटिक. अब बिकॉज ऑफ हाइब्रिड varieties, there may be gluten sensitivity also. If actually you are having a gluten sensitivity or you are a celiac patient, then we really need to take care that just in lieu of having the food, you are not having more of the processed food. Because the moment we say wheat nahi khana, people land up on this wheat. So gluten means gluten भी है, मैदा भी है, सूजी भी है. So आपको ये तीन नहीं खाने, but thankfully we do have millets. तो millets आप easily खा सकते हैं, पर millet का introduction भी one by one होना चाहिए. The moment we say millet, you know, I had one patient, educated doctor. So she said, I'm having millets. इनका अच्छा, what is the name of the ragi? No, I'm having those millets. So यू आर नॉट अवेयर. मिलेट्स तो आपका मोटा अनाज ही तो है. आप खा रहे थे, इतने सालों से खा रहे थे, आपके यहाँ पे था, बट क्यों? क्योंकि अब अमेरिका ने उसको वो कर दिया, तो इसलिए वी आर गोइंग फॉर मिलेट्स. आई से वी शुड बी थैंकफुल टू आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हु हैव रियली गॉट दिस थिंग बैक. एंड दिस इज नॉट जस्ट दैट ही वांटेड इंडिया vocal for local, it is more for global warming also that we are really working upon. So gluten-free diet is there. See, please don't have it just to lose weight. If you are actually celiac patient or you are having gluten sensitivity, please go and talk to a trained or registered dietitian or a professional. Because in gluten many times we do see the deficiencies also. बिल्कुल. B12 भी आ जाता है, zinc, magnesium, so many things which need to be taken care of. You can very well follow it if it is well planned.
under guidance, supervision of some professional. यही वो डिफरेंस आता है फैक्ट और फैड डाइट का, कि बिल्कुल आपने सही बोला, बिकॉज इंटरनेट पे वो चीज फेमस हो गई है तो सबको एक तो इंक्लूजन या फोमो वाली चीज है कि मुझे भी है, मैं भी कर लेता हूँ। तो ये है, स्पेशली आई थिंक वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ या एज अ डॉक्टर, आई थिंक मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि न्यूट्रिशन और डाइट का बहुत ही रोल है, इवन फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। तो वी कीप ऑन ट्राइंग टू लाइक पुश पेशेंट्स टू गेट देयर प्रॉपर डाइट प्लान, और एटलीस्ट जितनी हमें नॉलेज है उस बारे में हम तो इम्प्लीमेंट करते हैं कि अनाज ऐसे खाना चाहिए, करना चाहिए। So significantly, there is no doubt about it. There is a very big role, and that needs to be followed. But then again, एक पर्सन के कहने से और पूरे परिवार का जो वो कहना है वो चेंज नहीं हो सकता। तो कमिंग टू दिस ओनली एंड सेइंग, जो हमारे यहाँ एक रिस्पेक्टफुल कल्चर या फिर whenever people come to our house, a way of showing love या respect is through food. How much is that justified for our health? As I said, हमारे हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव, because we find it, we have an emotional connection with it. This is the kind of a respect. If a guest is coming to my place or to your place, we need to set a table, a proper table, because आपने नहीं किया तो आपको लगता है ओ मैंने इज्जत नहीं दी, और सामने वाला कहीं ये ना सोचे कि मैंने आपको इज्जत नहीं दी। और जब हम उसके घर गए थे ना तब पता है 5 डिश थी, अरे नहीं जब उनके घर गए थे ना 7 डिश बनाई थी। And I always tell to all the females, especially the wives, अपने प्यार की रोटी मत खिला क्योंकि the husband is through with 3 chapatis, बस आधी चपाती है। So many times I put it that way कि हम खिला खिला के मारते हैं। I give due respect that love is there, but you need to understand the capacity and the limit of a person also. You cannot feed. I'm happy that way. The young generation who's coming, they are very blunt that way. No means no. But They don't want to exceed that thing. It's very uncomfortable for a lot of times, like visiting somebody's house. I'm saying this very personally, a person who's on a restricted diet, like there are some things I do not want to eat. It's not like restriction. I don't want to eat packed food. I don't want to eat carbonated drinks and everything. नहीं खानी मुझे, मेरा प्रिंसिपल है कि मुझे नहीं चाहिए मेरी हेल्थ के लिए। बट व्हेन यू विजिट प्लेसेस, बिकॉज आई डोंट थिंक ट्री ऑल्सो और कॉफी ऑल्सो, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे कई बार लगता है सामने वाले के लिए वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मना करे जा रही है, मैं इसे क्या खिला दूं। So I just have water and I'm really happy in that. So it is a social issue also for some things I say, because people like us, we are social also, but then we don't want to eat. तो सामने वाले का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है उससे कि अब ये आ रहे हैं क्या खिलाएंगे, क्योंकि हर चीज को मना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो कल्चरल एसोसिएटिंग रिस्पेक्ट एंड लव विद फूड, इतना कल्चर इनग्रेन्ड है वो टूट तो नहीं सकता, बट एटलीस्ट देयर कैन बी वेज टू मॉडिफाई इट पर से। There are ways. Actually, if I say पेशेंट से कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, जाओ भैया शादियों में जाने बहुत आसान है जाने, you go and you eat roti and dal sabzi, it's available. As you are saying you are going to someone house, yes you are right. इतने सालों से हमारी मेंटालिटी में ड्रिल है, उसको बाहर लाना बहुत मुश्किल है। मे बी यू एंड मी वी अंडरस्टैंड एंड वी से इट्स ओके, यू डोंट वांट टू ईट, इट्स ओके, पोर्शन कंट्रोल इज गुड इनफ, राइट। बट पुराने लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसका ट्रिक ये है दैट इट शुड बी पोर्शन कंट्रोल। Instead of having 4 kachoris, I'll have just half or one. Instead of having a full bowl of aloo ki sabzi, I'll just have the jhol, that gravy part, right? Saying no to carbonated drinks. I always tell it to my patients, say मुझे allergy है, मुझे डॉक्टर ने मना किया, I'll have lemon water, I'll have simple tea, I'll have coconut water, right? नहीं तो मट्ठा पिला दीजिए, they'll be happy to serve. Instead of going for tea, okay, I'll have lemon water, सीधा नींबू पानी पिला दीजिए, नारियल पानी, सत्तू, मट्ठा. So we are going back. They'll be happy that yes, आप खा रहे हैं उनके यहाँ, पी रहे हैं और बिल्कुल अपने तरीके का खा रहे हैं. Okay, lavish food is there. It is being served. के दाल मखनी, कढ़ाई पनीर and all that. Naan has to be there. So it's okay. I'll have just half bite of naan and I'll have one chapati or maybe just small portion of rice with curd. So biryani type. So portion control is very important. And we being humans, we cannot be socially isolated. So you need to learn the ways. Like if I'm traveling, you need to learn the smart snacking. If I'll carry my makhane with myself, buna chana with myself. And
To be very frank, now even in Meerut culture, I'm seeing a lot of difference. They are going to serve you the dry fruits. They are not going to serve you the chips, right? Even if the chips are there, then the banana chips are there. It's okay. You can very well have one. So you really need to take. You cannot show a disrespect to the host also. So it is your way and your understanding that how you do it by doing the portion control, by taking out the best option which is available, and then agar ho bhi gaya, it's okay. So give yourself grace and compensate at the very next day. I always teach my patients the law of compensation. Like if I'm planned for a wedding in the evening, so throughout the day I won't be hungry. But yes, definitely I'll collect those amount of calories in my bank which can be used during the night time. For example, if I'm going for a dinner, I'm planned out for a dinner. I'll start my day with a smoothie. Then I'll have lots of fruits, salads, coconut water, maybe sattu, mattha, and all those things. Then out of 1,000 calories, what I've utilized is just 200. Maybe 250, 300, 700 is still there. तो ठीक है, उस 700 में जाके अगर मुझे कचौड़ी भी खाना पड़ा, which is showing respect to my host also, which is giving them pleasure and satisfaction, that's okay. And by chance, accidentally, if I've gone out, then the next day. So what you need to do is portion control. Moderation is the key. And then you need to learn the smart snacking, smart choices, and law of compensation. So food has to be eaten. Food, I always tell it to all my patients, खाना आपका दुश्मन नहीं है. By not eating, you are creating a backfire for your weight gain. So don't do that. बिल्कुल. अब फूड की यहीं से अगर हम बात करते हैं तो दो तरफ जाता है. One is for people who are working in the gym to reduce weight, and one is people who work in the gym to build body. हम दोनों को ही बोलते हैं कि इसमें फूड का जिम से ज्यादा रोल होता है. तो डू पीपल स्पेसिफिकली कम टू यू विद दीज टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कि मेरी आप प्लान बना दीजिए, या फिर ऑब्वियसली यू वुड बी टेलिंग देम दैट इफ यू आर गेनिंग मसल तो आप ये खाओ, इफ यू वांट टू लूज वेट ये खाओ. तो डू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आल्सो कि जिम में से बॉडी नहीं बन सकती है, वो किचन में बनती है. एक्चुअली थैंक यू. मेरी फील्ड का आयरनी ये है कि वन साइज फिट्स ऑल. Every fever will have 650 mg paracetamol and it will go. Although it's not so. Nutrition is a science. It is tailor cut. Personalization is the key in the field of diet. See, it's while you are reducing weight, it's 70% diet and 30% exercise. But people take it the other way around. भूखे रहते हैं. हाँ, भूखे रहते हैं. Weight loss में हमने खाना छोड़ दिया. Very low calorie diet. As I said, eating less will decrease your metabolism, right? Plus, it will release the stress hormones. The moment you'll have stress hormones, तो hunger pan बढ़ेगा, guilt feel आएगा, फिर stress hormone और rebound weight बढ़ जाएगा, फिर आपका weight बढ़ेगा. So it's a backfire. See, I always say gaining health by eating nutritionally balanced diet is a key to weight loss. If you are trying not to eat, and by not eating, if you are trying to reduce weight, then what will happen the day you start eating? You gain back. This is a very common saying. डाइट करके वेट लॉस तो किया था पर उतना वापस आ गया. खाते पीते वेट बढ़ाया है, खाते पीते कम करिए. That is the crux actually. Eat healthy, gain health. Second question, what you asked me, the persons who really want to build up their body. Lot of dependency is there on the supplements because the gym person makes you crazy. They push you for having the supplements, fat burners, protein supplements. They are not at all required actually. I always ask one question to all of the patients who come back to me. What actually you are looking forward for? Do you really want to gain health? Health doesn't mean you have to have a pump in your biceps or so. नहीं चाहिए. If you really want to go for a muscle gain, are you going for weightlifting or are you a heavy weightlifter? See, because everything goes, it's individualized thing. If you really want to just have a healthy body, so 0.8 gram per kg body weight is enough. Now, even WHO have given the guidelines. I've seen the gyms in which females are tying 10 kg weight on their ankles and running on the treadmill. So what is happening now means after 6 months or so, they are having arthritis. बुढ़े गिर जाएंगे. कुछ घिस चुके लोगों के arthritis तभी आ गया. अब हम TKR तभी ज्यादा देख रहे हैं. So it has to be individualized. Please don't
go for the supplement if it is not required. Because if you are having a natural food, it is being 100% absorbed. And if you are having a supplement, it's 70% absorbed only. So eating natural घर का kitchen का खाना is the secret for gaining health, for losing weight. And वही कि जो खाते पीते बड़े हुए हो, आपकी जीन्स नहीं चेंज होगी, आप इंडियन हो, इंडियन ही रहोगे. हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा सप्लीमेंट खाने का मतलब है यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग वेरी एक्सपेंसिव यूरिन. That's all. Your body is excreting out everything. To be very frank, if you are having a multivitamin, it's not about that food. It's a gelatin getting accumulated in your intestine. So ठीक है, constipation भी आएगा, उसके साथ तैयार रहेगा. They don't want to see that. Lim C means vitamin C. Why not to have a proper नींबू every day? So natural को तो सब या तो ना इट्स एक्सट्रीम्स, ईदर पीपल गो वे नेचुरल और दे गो वे आर्टिफिशियल. वो बैलेंस नहीं है कि जब आपको रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे पे रिपोर्ट्स आती हैं तो पहले ही बोल देते हैं ये खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया. ऐसे नहीं, इतना तो आप नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली सी वर्किंग विद यंग फीमेल्स, it's an endless topic obviously, but we can sum it up by saying iron deficiency very common here in females. तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्टिन्यूसली एक सप्लीमेंट चलता है. देयर आर सो मेनी डाइटरी फैक्टर्स दैट ऑब्वियसली वी कैन मॉडिफाई, और वो पहले करने चाहिए, एक्चुअली करने चाहिए. अब अगर इफ वी सी, हमारे प्राइम मिनिस्टर इज ऑलरेडी वर्किंग विद दैट, अनीमिया मुक्त भारत, वी आर वर्किंग ऑन दैट. अगर हम देखें आंगनवाड़ी में, वी आर प्रोवाइडिंग द फोर्टिफाइड फूड. द सिंपल थिंग इज टू हैव आयरन इज जस्ट स्टार्ट कुकिंग द फूड इन योर लोहे की कढ़ाई जो आपने उठा के अंदर रख दी है. गोइंग बैक टू बेसिक्स, go back to the basics. See, I always feel proud in saying this, that Indian diet is the best diet. Our elders, ancestors, they were scientists. You'll never have khali chawal. You'll have dal chawal. Right? So that's protein with carbs, with lots of veggies. वो भी खाना जरूरी है. आपको मट्ठा शुरू से आपने पिया है, आप कांजी शुरू से पी रहे हो. So everything is probiotic. आप इनका अचार खा रहे हो. So everything has been there. But वो वही है कि अब आ रहा है सामने. Like if you talk about the golden milk. What's that golden milk? कच्ची हल्दी वाला. turmeric latte. Yeah, it's turmeric latte. Actually, so in that way we have been using this thing, and Indian kitchens are the best medical store, I should say. Bilkul. If you talk about the spices and the condiments, the dal, chini, methi, dana, but please, over here, I'm saying it on a public forum, that doesn't mean it is applicable to all. So you need to get the quantity done by a professional dietitian, or so, whether you can take it or not. Because there are so many food products which are permitted in some diseases which are not permitted. Like having cauliflower, broccoli and soya bean and thyroid is not permitted. But if you see, I've seen the females just to have a regular cycles and all those, they are having soya bean, even if they are a hypothyroidism. And see, this is something obviously only a professional can let you know. This is not something everybody knows. I'll just pin a thing here. पहली बात तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें ना मेरे बहुत हार्ट के करीब है. दिस इज समथिंग आई से ऑन अ वेरी टेप रिकॉर्डर के तरह ना, पूरे दिन क्लिनिक पे ये मैं बोलती रहती हूँ, ये करो, ये करो, ये करो. सो ऑब्वियसली टू बी इन अलाइन विद समबडी क्लिक समथिंग हियर. एक में ना एक थ्रिफ्ट जीन थ्योरी की हम बात बोलते हैं और पेशेंट्स को ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी आप नहीं चला रहे, आपके एंसेस्टर्स चला रहे हैं, यानी आपके जीन्स चला रहे हैं. आई एम श्योर यू कैन एलैबोरेट बेटर ऑन दिस. जैसा मैंने कहा, I do have patients who are NRI, who are staying in Canada, America, and different time zone and all that. So a patient comes to you and tell, I've been in America since last 15 years. So I tell them epigenic and epigenic genes वही रहेंगे, right? Environment changes, obviously we do understand that environment do have impact, but genes तो वही है ना. Like if in India we say that we are having अनाज बेस्ड प्राथमिकता है हमारे यहाँ. हमें बचपन से क्या सिखाया, पहले आधी रोटी खाओगे तो चावल मिलेगा, क्योंकि हमारे वो अंदर ड्रिल है. अब हमें भी ऐसा ही लगता है कि अनाज खाना बहुत जरूरी है. इफ आई टॉक अबाउट एवरीथिंग, एवरीबडी इज रनिंग इन अ रैट रेस, एंड वही वायरल थिंग जो दिखता है, नो कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट, वेरी लो कार्ब डाइट. मुझे तो रोटी के बिना ना ऐसे मजा ही नहीं आता कि आई कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. इफ आई डोंट गेट रोटी आई विल बी हंग्री. आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है आपको कार्ब्स खाने हैं, कार्ब दुश्मन नहीं है. ऑलवेज टेल कार्ब्स हैव अ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन. व्हाट इफ यू आर हैविंग
lot of protein supplements, but the carb is not there. So obviously body is going to use your protein only. So for what you are having so much of protein? See, a diet has to be balanced. Even the ICMR also have given 50 to 65%. It has to be carbs. What you can do is start following the plate method. I always suggest. Plate method is half of your plate is all veggies and fruits. Okay. 1/4 is the whole food. That is all your carbs and everything. जितना carb based roti है, चावल है, millets है, everything is there. Then 1/4 is your protein part. Okay. In protein, I always say go with the quality, not with the quantity. I do have patients who are coming to me, they are having 16 eggs per day. हजम कहाँ से करोगे? ICMR ने भी गाइडलाइन बदल दी है. Now it's 0.8 gram per kg body weight. Now it's not 1 gram per kg body weight, right? Indians के लिए, see, you cannot follow everything which is being given by the American and Europe. उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी फैट अलग है, हमारा अलग है, तो हमारी जीन्स वहां पे प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं. उनका बीएमआई अलग है, हमारा बीएमआई अलग है. हमारे यहाँ फैट परसेंटेज ज्यादा, उनके वहाँ मसल वेट ज्यादा है. So everything needs to be tailor cut and individualized as per your genes also. So carb is important. And just going blindly and following any diet, कि वो Atkins diet, keto diet, paleo diet, Mediterranean diet, सब कर लो, सब कर लो, और सब कर लो लेकिन किसी प्रोफेशनल के अंडर कर लो. अगर जरूरत है तो करो. Like if we talk about keto diet, it is meant for epilepsy patient. You know it very well. And we have seen so drastic, means miraculous results in that thing, right? So keto diet is not meant for weight loss, but people are following. वो तो ब्लाइंडली एवरीबडी इज डूइंग कीटो डाइट ना. ये तो क्योंकि नेट पे पढ़ लिया इससे वेट कम होता है, तो ये तो पहले एटकिंस आ गया था, फिर keto आ गया, फिर अब vegan is also there. Vegan is good enough, but again you have to have a professional with you. Like vegan में we are seeing hypovitaminosis, B12. It is much common, iron is there. So a diet has to be planned it out that way. You cannot say it's good if you want to be vegan. It's okay. We are becoming eco-friendly. यहाँ पे एक सेंसेशनल टॉपिक जो आजकल सबका चल रहा है, ये पनीर का क्या चक्कर है. सब डरे बैठे हैं, कोई अब पनीर नहीं खा रहा, प्रोटीन नहीं जा रहा उनके पास, वो पनीर नहीं खा रहे, पनीर सब खराब है. ऐसा है? सी, ये सेंसेशनल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी वही आ गया ना, वायरल हो गया. राइट. आई ऑलवेज से पनीर खाना है तो बिल्कुल खाओ, घर के दूध का खाओ. पर अब उसमें भी प्रॉब्लम है. अंडा पहले आया या एग पहले आई? दूध कितना प्यूरिफाइड है? दूध यूरिया का बना हुआ है. दूध पाउडर्ड मिल्क है. दूध कितना प्योर है? प्योरिटी ऑफ मिल्क डिपेंड्स, क्योंकि पनीर आएगा तो दूध से. अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑक्सीटोसिन बैन कर दिए हैं. रीजन बीइंग दे वर बीइंग गिवन टू द बफेलोज एंड द काउस. राइट. इफ वी सी मींस in whole, if we see, so the cows and the buffaloes, they are having deficiency. So milk secretion proper कैसे होगा? मिल्क सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है, वही आप अपने बच्चों को दे रहे हो, तो उनको ग्रोथ कहाँ से आएगी? और जो अडल्ट्रेटेड चीज है वो अडल्ट्रेटेड है. FSSAI is doing a lot, government is doing a lot, they are trying their level best. So the best way is you can very well have milk and paneer. सोर्स अच्छा रखिए, किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए. वी नो इट्स टू डिफिकल्ट टू कमेंट कि हाँ सब कुछ प्योरिटी है, बट यस you should do the test for yourself and try to prepare paneer, matta, dahi at your home. See, if I quote a very short example is curd and yogurt. Right, so 1 katori of curd will give you 8 grams of protein. 1 katori of yogurt will give you 10 to 12 grams of protein. That is only difference. And then the preparation. घर पे बना लो. मैं 40 रुपए का ग्रीक योगर्ट खाऊंगी because that is in trend, that will help me out in losing my weight. I think best तो मुझे ये समझ में आता है, फिर पहले गाय लाओ, उसे बांधो, उसका चारा भी खुद खिलाओ, उसका दूध निकालो, और तभी प्योरिटी मिल सकती है. बिल्कुल है. सी वही whatever is possible feasible for a person. I think जितने आपके मील्स में आप कंट्रोल चीज देख सकते हो, आंखें तो खुली रखनी है. बहुत डाइट पोल्यूशन हर चीज का बहुत रोल है. वट एवर इज पॉसिबल फॉर यू, एटलीस्ट उतना अवेयरनेस रखें, और अपने हिसाब अपनी डाइट के लिए तो करना पड़ता है. और उसमें भी आप ये कर सकते हो कि जो आपका मिल्क मैन है उसको आप पहले ही बोल दो भैया थोड़ा सा पैसा फालतू चाहिए ले, बट अपनी गाय का चारा. आई हैव हर्ड मिल्क मैन सेइंग दिस. इनिशियल महीने में, जो महीने के पहले 10 दिन है, दूध अच्छा आएगा, उसके बाद दूध खराब आएगा.
रीजन, पहले 10 दिन हमारे पास पैसा होता, मैंने अच्छे से चारा खिला देती हूँ, उसके बाद 2 महीने खाना नहीं देता। You can see the difference in the quality. So this is the way कि आप उसे कहिए कि भैया हमसे पैसे ले ले, या फिर 500-700 मिल के एक गाय खरीदो। योर अरे बहुत मुश्किल, एवरीथिंग इज सी इन सच अ फास्ट पेस्ड लाइफ, आई अंडरस्टैंड पीपल, दैट इज व्हेन इट बिकम्स ओवरवेलमिंग। एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम। आप कहाँ तक गाय पालोगे और करोगे? तो वही है, आई ऑलवेज टेल देम कि किचन एवरीथिंग ऑर्गेनिक एंड ऑल दैट अपने किचन में लगाओ, पॉट्स में लगाओ, जितना कर सकते हो उतना करो, अदरवाइज तो हम ऐसे वहां पे रह रहे हैं कि पॉल्यूशन हमारे अंदर ही होगा। दैट इज वाई पीपल, जो जितना अभी भी रूरल पीपल हैं, जितने भी लोग गांव में रहते हैं, दे हैव अ मच बेटर हेल्थ कंडीशन देन पीपल इन दी सिटीज, बिकॉज वो ऑर्गेनिक साइड उतना है, उतना वो पोल्यूशन से दूर है। और जितने लोग सिटी में वो उतना ही पोल्यूशन, इतना अडल्ट्रेटेड फूड खा रहे हैं। वर्किंग इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस, आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दिस, इट इज वाइडली डिफरेंट। जो उनकी इम्यूनिटी है, जो उनकी बॉडी रेजिस्टेंस है, वो सिटी पीपल से कंपेरेबल है ही नहीं। कंपेरेबल है नहीं, लेकिन उसमें भी अब प्रॉब्लम आ गई राशि, क्योंकि जितना अडल्ट एज ग्रुप है उनका वो हेल्दी है, हाँ, जितना यंग है दे आर बिकमिंग लाइक आवर सिटी किड्स ओन, क्योंकि वो इंडिजिनस चीजों से दूर जा रहे हैं। इंडिजिनस चीजों से दूर जा रहे हैं, प्लस अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। नाउ यू हैव जोमेटो एंड स्विगी, बर्गर विल बी अवेलेबल विद इन हाफ एन आवर, राइट? नहीं आएगा तो फिर वो उसको देगा। होल प्रॉब्लम विद दिस, जो डोपामिन फायरिंग जो हम बात करते हैं ना, द क्लिक्स आर द एक्चुअल प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो पेशेंस नहीं है, तो हो गई है पेशेंस फैक्टर। This even you must be noticing down. Everybody is becoming yes boss. They don't want to listen. No, no तो चाहिए ही नहीं। yes, क्योंकि हर चीज इजीली फ्रीली अवेलेबल है। हर बच्चे के पास, पेरेंट्स कम टू मी, मेरा बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, इसको चिप्स ही खाने हैं। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन आई आस्क देम, इन्हें खरीद के कौन देता है? So my mom is the pediatrician, and this is what I've been hearing since I was a small kid, and she used to say this to everybody. चिप्स घर में आए कैसे, सिखाया किसने? तो मुझे बताओ, टेस्ट तो तुमने ही डाला ना, अब खा रहा है बच्चा, अब बताओ क्या करोगे फिर? सो यस, दिस इज एन इशू, बट यस, विद द ग्रोइंग जनरेशन एंड ग्रोइंग अवेलेबिलिटी, ये बढ़ेगी ही प्रॉब्लम। सो हम यही बोलते हैं, जो डेवलपमेंट के साथ जो डेवलपमेंटल बीमारियां आती हैं, वो भी हम उतनी इन्वाइट कर चुके हैं है बस ठीक है। अब जैसे आई डू हैव फ्यू पेरेंट्स, इट्स लाइक दे आर बिकमिंग ओवर पोसेसिव एंड ओवर प्रोटेक्टिव ऑल्सो। हमारा बच्चा ये दूध में चीनी नहीं लेगा, पर कहीं ना कहीं जाके मीठा खा लेगा, या हमारे बच्चे को हमने नमक ही नहीं खिलाया फॉर 2 years, हमने अपने बच्चे को चीनी नहीं खिलाई, इट्स गुड, प्लीज गो अहेड, इफ यू आर गिविंग द गुड ईटिंग हैबिट देन यू शुड, बट डोंट बिकम लाइक अ बेताल ऑन देयर हेड। पीछे ही पड़ जाओ, यही खाना है, यही करना है। कैन यू बिलीव इट, आई हैव अ पेशेंट हु एवरी टाइम इन समर ही मूव्स टू मसूरी, रीजन बीइंग कि AQI खराब हो जाता है यहाँ। Extremes of everything is bad. Extremities, you cannot be an extreme person. See, moderation is a key in each and everything. आप बच्चे को तो इम्यूनिटी तभी दोगे ना जब वो नीचे चलेगा। आप उसे हमेशा कारपेट पे या अपने लैप में उठा के रखोगे तो पहली बात उसके आपने स्किल्स निकाल दी सारी। The hygiene hypothesis again. Exactly, आपने उसकी सारी जितनी मोटर स्किल्स थी, ग्रॉस स्किल्स थी, सब हटा दी, इम्यूनिटी बनने नहीं दी, एंड देन यू आर कंप्लेनिंग। I was taking a workshop, so one of a parent, she said, मेरा बच्चा करेला नहीं खाता। आज से आप खाते, करेला कोई खाने की चीज है? तो बच्चा क्यों खाएगा? पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स, राइट? सो हमने भी जो बचपन से देखा हम वही खाते हैं। दैट इज वाई ना, फैमिली के हिसाब से खाना चलता है हमारा। Exactly. So you cannot anticipate the thing for your kid if you yourself is not following it. So just try to be a role model for your kids also. आई एम श्योर यू गाइस हैव सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे अंदर से इतने सारे निकल के आ रहे हैं। आई मेक श्योर आई पुट डाउन मैम कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिलो, एंड यू कैन कंसल्ट हर फॉर योर पर्सनलाइज प्लान्स, बिकॉज मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं। आई जस्ट ट्राई टू सम अप विद अगेन अ वेरी वायरल या बर्निंग थिंग of importance of diet in PCOS. I am sure everybody knows by now, it is every second or third female has PCOS now, and it is not a treatable condition. अगर आपसे कोई कह रही है ठीक हो जाती है, तो नहीं होती है, मैनेज होती है। इसमें डाइट का कितना बड़ा रोल है और क्या करें? The diet is the cornerstone for prevention as well as the treatment. Right? See, if we talk about the evidence based and the researches,
It says that even if you lose 5% of your present weight, the PCOS signs and symptoms, they get resolved. I do have so many PCOS patients whose first child was by IUI, IVF on steroids, but now after losing just 10%, they conceive naturally also. So in PCOS treatment, weight loss is very important. Second thing, just in lieu of losing a weight, you shouldn't follow any fat diets. Eating healthy is very important. You really need to have nutritionally balanced diet. Like with PCOS, there are so many myths. सोया नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, चीनी नहीं खाना है, insulin sensitivity is there. Like, but that doesn't mean कि आप sugar नहीं लोगे. You need to have natural sugars. Milk and fruits की लेनी है. If you are not going to have fruits and salads, vitamins and minerals नहीं आएंगे, तो आप already और deficiency में चले जाओगे. So PCOS means a nutritionally balanced diet which is very rich in fiber, fruits and vegetables, all the indigenous. Protein needs to be maintained. That is 0.8 gram per kg body weight, maybe with exercise. If you are really lifting a heavy weight, maybe 1 gram. Don't stop eating carbs. Carbs are important. Again, the percentage, how much we divide, that makes a lot of difference. Plate method is very important. Regular exercise, 1 hour per day. So regular exercise is very important. That doesn't mean that if I don't like going to a gym, I need to hit the gym. No. See, exercise means anything which increases your heart rate by 20%. So that could be your brisk walk also. That could be your jogging also. If you don't get any time, anything, just don't do anything. घर की सीढ़ियां ऊपर नीचे हो. Especially BJP, बर्तन झाड़ू पोछा करो. That's very good. That's a very good kind of exercise. Gardening. Very true. Washing your car. So all these things. And I always tell, if you don't feel like going to gym, don't go. Do any kind of exercise which make you feel happy. And the most important, what I want to say, it's 80% your mental state, the counseling part, what it really works, and 20% is the prescription. So for that 80%, you need to relax. It is, we don't say, as Dr. Ashi has very clearly said, that it won't reverse, but it is being manageable. You won't have the symptoms. We do have patients who have conceived naturally also. See, for the treatment, if we talk about it, it's all the steroids, which may give you the weight gain also. And they do come up with few of the other problems. But if you're losing weight, that's a very natural thing. You can very well do it. And losing weight by gaining health is a trade secret. And gaining health by eating nutritionally balanced diet. I'm repeating it so many times is the reason that please eat. खाना आपका दुश्मन नहीं है. Right? Nutrition is not that complicated thing. You need to start slow, stay consistent. People want a shortcut. Magical result चाहिए नहीं आएगा. You need to stay consistent. You are not in competition. You cannot be perfect. I'm not in competition with anyone else. I'm in competition with myself. I'm getting better every day. Like if I started with a fruit or a salad in my breakfast, it's good. I'm improving. I'm improving every day. I'm starting slow. And the most important part, I'm a human being. So I need to give that grace to me. I may have cravings. It's okay not to be okay. Right? So even if I'm having a craving, I'm going and having एक रसगुल्ला या आधा रसगुल्ला, it's okay. खा लिया जाके खाओ, पोषण कंट्रोल करके खाओ और खा के भूल जाओ. PMS craving control होती भी नहीं है. Exactly. So the way is dark chocolate खा लो, 0.75 खा लो, 0.5 खा लो. When there's so much going around you, I think we discussed this. I talk about this personally also. इतना ज़्यादा focus on your weight and looks is very detrimental. It is occupying so much of your mental space. अब सारे दिन इसमें involved हो, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा weight कितना हो गया, तो रोज weight नहीं नापना है. 10 दिन में एक बार नापना है, नहीं फर्क पड़ता. पीपल उसे ना 3 दिन में इतना किलो कम हो गया है. दैट्स वाटर शेडिंग. इतनी जल्दी वेट नहीं कम हो सकता आपका. एक्चुअल वेट लॉस और आफ्टर वाटर लॉस शुरू होता है. एंड पीपल आर नॉट, they don't recognize it. See, I always say I am beautiful the way I am. It's okay not to be okay, but please don't carry that guilt feel. क्योंकि जैसे आप guilt feel carry करोगे, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा, फिर क्रेविंग होगी, फिर आप खाओगे, फिर वो. It's a vicious cycle which is going on, right? You need to break it somewhere.
I'm a human being. Accept it. I always tell to all of my patients, weight is not a right criteria. See clinically and see the health part. If you are gaining in health, your acne is not there, you are losing in inches, there is improvement in your energy level, the urine output is normal, there is improvement in your bowel system. So why not? Why we are looking down on the weighing machine? वो एक actual criteria नहीं है. Absolutely. It's always the clinical health, how you yourself are feeling. I've seen a lot decrease in the anxiety and the stress on the face of the patients. You can really make out the skin tone, the improvement in their skin complexion, so many things. The very first thing I always say, you need to accept yourself. You need to love yourself. Self-love, self-care is very important, which people really don't. So that is there. I am beautiful the way I am. If you don't feel like, then close your eyes. I always tell to many of my patients कि सामने वाला बोल रहा है ना, I do have patients का मेरा खाली 40 kg वेट है, लोग मुझे बोल हाँ बहुत है, इंडियन सोसाइटी में बहुत है ना, सब बोलते हैं बढ़ा लो कम कर लो, सबकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है यहाँ पे. करते हैं, करने भी चाहिए, पर कुछ हद तक. एंड अगेन बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक बीच में ये बोला कि कुछ भी ऊपर से लगाने से नहीं होगा, सब कुछ गट से स्टार्ट होता है. योर ब्यूटी, योर हेल्थ, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्टमक एंड योर गट. बिल्कुल विल एंड ऑन अदर सेंसेशनल टॉपिक. ये वेट लॉस इंजेक्टेबल मुंजारो, इसके बारे में क्या कहना है? ये शॉर्टकट जो आ गया, अभी इसकी रिसर्च है या अभी पता चलेगा कि क्या कर सकता है ये? See, so many things are already there. Again, I'll repeat the same thing. There is no shortcut. बिल्कुल. So there is no shortcut. Gaining health is a reason, is a good trade secret, and gaining health by eating nutritionally balanced diet. जैसे हमारे बड़े बूढ़े खाते थे, हमें खाना खिलाया गया, सलाद, दाल, सब्जी, रोटी, दही, वही खाइए. Don't go for any shortcuts. There is no shortcut. Nobody can change your metabolism except कि आप खाना छोड़ दें और फिर वो backfire शुरू हो जाए. So maintaining the metabolism. See, by 30, obviously by nature there is going to be a decrease in your metabolism. I can feel that. You can feel that, and it's there. बिल्कुल. And sarcopenia, obesity is very common in Indians. Americans में नहीं है, Indians में है, क्योंकि हमारा fat weight issue से ज्यादा है. So it's okay. See, in ideal scenario, you should start as early as possible. आपको बचपन से ही एक्सरसाइज करनी है, नहीं करी कोई बात नहीं, 20 साल से कर लो, 25 साल से कर लो, वो भी नहीं हो रहा तो जब जाओ तभी करें. ये तो करनी पड़ेगी. This is what I say. In the kind of society करनी पड़ेगी. आपके बड़े बूढ़े, अगर हम जैसे अभी गाँव की आपने डॉक्टर राशि बोला, तो आज भी खेती कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं. अब हमारे यहाँ तो हम फुली ऑटोमेटिक मशीन यूज करते हैं. अब उसमें भी एक मेड है जो उठा के सूखने डालेगी, उतार के लाएगी. So we lose muscle, na? We lose muscle very soon and we gain exactly. weight. And over here, I always give one example which is very common, things near to my heart. See, if it would have been easier कि मैं किसी और से काम कर रहा हूँ और मेरे पे असर आ जाए तो हर एक कोई कर चुका होता है. I cannot tell my maid to run for 1 hour by giving her just 1,000 rupees and the effect will come on, right? All of us, see, value of health always gets appreciated with time. All of us differ in the way we earn the money. But yes, health comes with the difficult path. You really have to work hard to gain health. And there is no shortcut to it. You need to do exercise. कुछ भी नहीं करो, घर का कुछ भी काम करो. पर करिए. It's your body, you have to do it. What kind of fuel you are putting in is very important. यही जितने लोग बोलते हैं ना, प्लीज एक वेट लॉस की आप दवाई लिख दो. आई सेड इफ इट वाज दैट इजी, आपको आसपास कोई मोटा जना मिलता ही नहीं फिर तो, अगर दवाई खा के कम हो जाता तो. हिपोक्रेट्स की वो है ना, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड. आप जो रोज अपने अंदर डाल रहे हो वही आपकी आदतें हैं, और जिस तरीके का खाना खाओगे वही आपकी बॉडी बनेगी. So it depends upon you कि आप चिप्स खा के काम करना चाह रहे हो या रोटी खा के काम करना. There is a really significant change once you start changing your diet and being very mindful of what you are consuming. And we are going to continue this conversation in the comment section below. I have so many questions, which is acne specific diet, which is mental health specific diet, but obviously we cannot cover everything here. I'll make sure मैं मैम की डिटेल्स डालूं, आप कंसल्टेशन ले सकते हो, अपनी पर्सनलाइज्ड डाइट बनाओ जो टेलर मेड है आपके लिए. So thank you ma'am so much.
This is a topic which is very close to my heart. I genuinely believe diet can change so much, and it is genuinely, food is medicine. So thank you so much. आपने इतने short में इतनी enlightening बातें करी. And any closing remarks that you would like to say? Eat healthy, and stay active. That is the crux. And food is the medicine. You have to eat food like a medicine, otherwise, you need to eat medicine like food. Popping up all the medication after 50 is not required if you are mindful from the beginning. So, I always say that moderation is a key. You have to do the mindful eating. Portion control is again a secret, and eating nutritionally healthy, balanced diet can help you in preventing so many diseases and in treatment also. So, see, grounding needs to be strong enough. And grounding will be strong enough if you are going to have a balanced diet. And by having a strong grounding, you will have a good health, which will act as a bulletproof jacket in front of you. So, any kind of a stress, whether that's physical, psychological, emotional, if you are having that bulletproof jacket, nothing can affect you. Very impactful words. Very impactful. So, it's Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everybody, for joining in. This is Dr. Rashi Agarwal signing off. See you again next Saturday.